length that finance is all about money and investment. So whenever we talk in monetary sense, or we are talking about money, how to use that money, how to raise money for the business, we are actually talking about finance and financing. In a more appropriate sense, this paper is all about financial management. So, how are you planning? How are you raising funds? And then, how are you effectively using those funds to further the growth of your business? That is what finance and fundamentals of finance for business is all about. Now, till now, what we have covered is the meaning of finance, the features of finance, which is all about looking for good, profitable investment opportunities, decide on a good mix of funds, some percentage equity, some percentage debt, making informed future decisions, and controlling in the sense that keeping things in your organization under check with respect to usage of finance, usage of money, investment, and then rework and improvise on your decisions. That is what is the sum total of finance. After this, we covered what are the functions of financial management, and first and foremost was the aim and objective to increase the profits of the firm. Now, in the subsequent topics, we'll actually have a new look, new fresh perspective with respect to the objective of profit maximization. But for the time being, what we need to know is that profits are actually generating further funds for the firm, which enables further investment. So, profit generation is very, very important. Again, when we need to evaluate how efficient we have been with respect to our operations in the business, profit is a yardstick, a standard of performance. You need to compare your firm's performance with the performance of your competitors. Profit is again the yardstick there. So, profit generation, earning profits, maximizing profits is very, very important. And one of the smaller steps in that direction is also reducing the cost. Then, looking out for sources of funds is another function, reducing risk, creating long term value. So, this is what we covered in the last class. Today, we start with the scope of financial management. Under the scope of financial management, we talk about the subject areas which are within which are covered in the financial domain. So, economics is all about resources, and finance itself is a very, very important resource for the firm. Then economics also talks about micro level factors, macro level factors. Financial management में भी micro और macro environment काफी इम्पैक्ट करता है बिजनेस के ऑपरेशंस को. You use the concept of money value, time value of money, वहाँ पर mathematical calculations भी हैं involved. All this comes under financial management too. Again, another subject area that is covered under financial management is accounting. तो अकाउंटिंग से हमें वैल्यूज मिलती हैं, हमें फिगर्स मिलती हैं, और उन पर हम सब्सिक्वेंटली वर्क करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस आगे हमारे प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट करते हैं. सो दिस इज अ टू वे काइंड ऑफ रिलेशनशिप. Accounting will give you all the financial numbers you require,
and then that facilitates the financial decision making in the firm. Mathematics, there's a lot of calculation which we'll be doing, and one of the more important topics that we'll be covering here is time value of money, present value of money, cost of capital. I'll discuss in brief with you. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारे सिलेबस में हम यूज नहीं कर रहे, बट इन्वेंट्री या स्टॉक जब हम वैल्यूएशन करते हैं फाइनेंस में, then these concepts come into the picture. So there are a lot of tools and techniques that are used in financial management also. And now actually basically everything is done through softwares. Excel is used a lot जब प्रैक्टिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट होता है फर्म्स में, बिगर ऑर्गेनाइजेशंस में, तो ये सब कैलकुलेशन अब सॉफ्टवेयर्स के थ्रू या स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू होती है. Then financial management and production management. Again, production is the prime task for the organization. Planning of production, smooth implementation, evaluation comes under production management. बस उसके लिए जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, जो भी फंडिंग रिक्वायर्ड है, दैट इज कमिंग थ्रू फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो दोनों जो डिपार्टमेंट्स होते हैं फर्म के, या दोनों जो फंक्शंस होते हैं, बहुत क्लोजली अलाइंड होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में भी रॉ मटेरियल सोर्सिंग होनी है, या जो मैं अभी आपको टर्म यूज कर रही थी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, रीऑर्डरिंग है, these are also coming under the financial domain. So these two areas are working in close tandem with each other. Then financial management and marketing. So you are doing good, your business is smoothly doing the production part, but then marketing of your products and services is equally important. Marketing is aiding financial management, and the funds required for marketing are coming through financial management. Financial management and human resources. Now, marketing is is more than selling, but अभी simple terms में आप अपना product reach out करवा रहे हो to your prospective consumers and your actual consumers. But human resource is something that is inherent. No firm can work, operate without human resources. And again, to maintain a good quality of resources, human resources, you need funds. तो देयर जो भी आपने वेजेस पे करनी है, आपने पर्क्स देने हैं, बोनस देना है, those all decisions come under financial management. So again, two areas that are working together. So that was all about the purview of financial management, the scope of financial management. Next topic, very, very important topic, is objectives of financial management. So generally you have one question from this concept in your main exam. So here we talk about what is financial management trying to achieve, or in which direction is financial management working. So there we have two objectives. One is profit maximization and the other is wealth maximization. Now, as a layman, all of us understand कि profit earn करना बहुत important है, और firm वही profits आगे growth के लिए use करती है. But as finance students, what we need to understand is that at the end of any given day, this objective is placed higher over profit maximization. This is the objective of wealth maximization, that is maximizing the wealth of the shareholders. So when I say profit maximization,
I talk about increasing earning per share. And when I talk about wealth maximization, I talk about increasing the market price of the share. Now, how are these two things different? And what do we mean by earning per share, market price per share? Now, जो आपके business होता है that runs on a proper, there's a proper business model. I'll insert a blank page and I'll try to explain it in a better manner. Okay, so any firm is producing goods and services, they are sold in the market and that generates the revenue for the firm. So revenue is quantity sold into the price per unit. ओके, ये आपको आपका रेवेन्यू दे देता है फर्म का. नाउ टू earn this revenue, a lot of expenses are incurred. So from the revenue, we subtract the expenses and we get our earnings before depreciation, taxes and interest. तो इसको EBDIT बोलते हैं या फिर profit before depreciation, interest, and taxes. So let me just quickly explain the terms that have been used here. Revenue is the main source of income for the firm. The number of units sold into the price per unit gives you the revenue earned. उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस इनकर करे हैं हम उसको माइनस कर देते हैं and we get the earnings before depreciation, interest and taxes. इसके बाद हम फर्म के जो प्रॉफिट्स डिराइव करने के लिए we reduce the amount of depreciation. What is depreciation? A firm uses a number of assets. Assets are things of value owned by the firm which help in uh, accelerating the earning capacity of the firm. So any firm would purchase a machinery, फर्नीचर, फिक्चर्स, प्लांट, मशीनरी, ये सब एसेट्स होते हैं फर्म के और ये फर्म के साथ दे stay with the firm for a long period of time and help in increasing the earning capacity of the business. So, a factory building, your furniture, your machinery, all these are instrumental in the operations of the business. अब ये assets value में same नहीं रहते. Let's take a very layman example. Say you go to Maruti Suzuki showroom and you purchase a new car. Now you make the payment for the car से आपने Ciaz purchase करी 10 lakh hypothetically आपने वहां पर pay करे. You get out of the showroom, next red light you have a change of heart and you go back to the showroom कि मुझे ये कार नहीं चाहिए मेरी needs के लिए. I think Swift is a better car for me and now I want to return this car and I want to purchase the second option, second car there. Will you get back the 10 lakh rupees that you had paid for this car? You have hardly moved 1 kilometer from the showroom. You come back with the car as it is. Will you get back the entire 10 lakh? No. What about others? What do you think? Will you get back the same amount? No, you won't be No, getting. Yes. Okay. So, Vikas, what is the reason why we'll not be getting back the entire amount that we had paid? Hardly been 10 minutes.
Since Ma'am, we because like the made ownership has changed now. Okay, one thing, yes, very good. The ownership has changed. You have taken the car, it has come on road, and now it has depreciated. Depreciation is loss in the value of asset ड्यू टू यूसेज, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। आप अपनी ही कार की बात करो, 1 साल से आप बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो कार, बट यू विल व्हेन यू विल गो टू रीसेल द कार यू विल नॉट गेट द सेम वैल्यू बिकॉज इट हैज डेप्रिशिएटेड। देन टेक्निकल ऑब्सिलेंस होता है कि टेक्नोलॉजिकली आउटडेट हो जाए प्रोडक्ट। आपने आपके पास आईफ़ोन 7 है और आज आईफ़ोन 13 है मार्केट में, आपका प्रोडक्ट टेक्निकली आउटडेटेड हो गया, इसलिए ऑटोमैटिकली उसकी वैल्यू में फॉल हो जाता है। All these are reasons why assets are depreciated. So business में भी आपके जो assets होते हैं वो एक passage of time के साथ depreciate होते हैं और उसके लिए हम accordingly entry pass करते हैं अपनी books में। तो अब आप अपने earnings before depreciation, interest and taxes में से सबसे पहले depreciation माइनस करते हो। इंटरेस्ट अभी यहाँ पर माइनस नहीं होगा। so what I'll do is I will write, because interest itself is a financial flow। तो अभी के लिए आप समझ लो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। ओके, I'll deduct the interest part also because अभी हम अर्निंग्स पर शेयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इंटरेस्ट का भी ट्रीटमेंट आपको दिखा देती हूँ। यस धैर्य, यू हैव अ क्वेश्चन। Yes. So after deleting minusing the value of depreciation, why will we get profit before depreciation and taxes? Won't it be profit? Okay, D has to be removed. I'm Yes. sorry. Yeah, I'm sorry. Okay, so this becomes profit before interest and taxes or earnings before interest and taxes. Okay. Now, since we are calculating EPS, I want to show you what earning per share exactly means. I am reducing the amount of interest here. जब आगे हम कैश फ्लोज की बात करेंगे तब हम इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं। यहाँ पर आप इंटरेस्ट को माइनस करोगे। ये कौन सा इंटरेस्ट है? ये इंटरेस्ट है, से फॉर एग्जांपल फर्म ने लोन लिया है, लोन पर जो बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये वो इंटरेस्ट है। या कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे हैं। डिबेंचर्स इज अगेन अ लोन that is taken by the company from the general public। तो उस पर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है उस बोरोइंग पे, और like a loan at the end of the time duration the principal amount also needs to be repaid back। so debenture is again a borrowing but it is from the general public। तो अब मैंने अपने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से इंटरेस्ट माइनस करा और मेरे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेक्स्ट स्टेप इज, लुक वी आर एलिमिनेटिंग ईच एलिमेंट वन बाय वन। पहले हमने डेप्रिसिएशन माइनस करा, अब हमने इंटरेस्ट माइनस करा, और अब हम माइनस करेंगे टैक्सेस। सो नाउ टैक्स इज reduced and I get profit after tax। Now, this is the accounting profit we are talking about, and this profit after tax will now be depending on कि firm कितना profit retain करना चाहती है और कितना distribute करना चाहती है। से ये 100 rupees profit है। Now the firm might want कि 40 rupees डिस्ट्रीब्यूट कर दे और 60 रुपीज रिटेन कर ले। डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है? अपने शेयर होल्डर्स को करना है, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को करना है। तो
₹40 जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न मिलता है दैट इज डिविडेंड। डिबेंचर्स के ऊपर जो रिटर्न मिलता है दैट इज इंटरेस्ट। ओके, तो नाउ द डिविडेंड payout ratio is 40%. 40% means out of every 100 rupees earned by the firm, 40 rupees will be distributed, and this will be distributed to the equity shareholders. This 60 rupees will be retained by the firm. Retention means कि आगे future investment के लिए firm ये पैसा use करेगी. Now let us suppose that there are 10 shares issued by the firm. तो अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है और ये जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये बेसिकली दो अलग एलिमेंट्स हैं, बट जब आप अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करोगे दिस विल बी 100 divided by 10 rupees 10 per share. This is what the equity shareholders are earning. Dividend 40 रुपए मिल रहा है, 40 divided by 10, तो आपका डिविडेंड पर शेयर ₹4 होगा. So once we have the profit after tax, that becomes the profit of the equity shareholders if the firm is not having any preference shareholders. और उसके बाद फर्म के ऊपर है, फर्म 40-60 रेशियो में रखती है डीपी को, या बहुत बारी फर्म 100% भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो उस केस में अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर आपका सेम रहेगा. This is how we calculate the earning per share of the firm. Any question in this? Any doubt? Is this clear to everyone? Yes. So when the firm, yes, Tanvi, Mom, what's the DP? DP, dividend payout ratio, जो 100 Okay. रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा उसमें कितना डिविडेंड पे आउट कर देगी फर्म, पे कर देगी शेयर होल्डर्स को. Okay. Yes. Any other doubt? Yes, Ayushi. Ma'am, EBDID is what is the full form of that? अर्निंग्स बिफोर EBDIT पूछ रहे हो आप? Yes, ma'am. अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. Okay. ठीक है, ये ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप ऐसे फॉर्मेट बनाते हो और उससे फिर आप डिराइव करते हो कि कितने प्रॉफिट्स हैं फर्म के. यस धैर्या. Ma'am, I'm sorry, I lost my connection. Could you please explain what DP stands for? DP is a dividend payout ratio after you have calculated, after the firm knows okay 100 rupees का profit है. अब जो फर्म है, फर्म का मतलब है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि इस 100 रुपए के प्रॉफिट को कैसे यूज करना है. तो कुछ पोर्शन हम डिविडेंड दे देते हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है फर्म में उनको कुछ रिटर्न देना है, और कुछ पैसा हमें लगता है कि आगे आगे कोई प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए कैश चाहिए तो हम अपने पास रिटेन करें. तो एग्जाम्पल मैंने दिया 40%. 40% मीन्स आउट ऑफ 100 रुपीज ऑफ प्रॉफिट अर्न 40% डिविडेंड विल बी पेड आउट. Dividend payout ratio is 40%. 40% of profit will be distributed to the shareholders and ₹60 will be retained by the firm for future purposes. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Yes. Any other doubt? Yes, Tanvi. Mom, can you please explain again the concept of DPS? The last Yeah, one. DP ratio क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आपको समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, मैं आगे समझाती हूँ आपको.
ओके, अब हमारी फर्म के पास 100 रुपए का प्रॉफिट है। जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है फर्म में, उसमें 3 टाइप के सोर्सेज़ आते हैं। जो फंड्स आ रहे हैं बिज़नेस में, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिग बिज़नेस। तो वन इज़ कि ओनरशिप फंड्स हों, जैसे ओनर अपना पैसा लेके आए, ओन फंड्स आ जाए। When the business grows in size with owners' funds, some money is raised from the public in form of shares. So when you see the latest, if I talk about Nykaa के बारे में आप सबने सुना है, Nykaa is an online platform dealing in personal care products, cosmetics and all. Now Nykaa started as a small business entity. Over the years, the popularity increased, and to further expand the scale of operations, the firm came up with an IPO. Now, IPO के थ्रू, IPO इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्म क्या करती है, अपनी ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट करती है, अपने शेयर्स इशू करती है। जो लोग वो शेयर सब्सक्राइब करते हैं, वो इक्विटी, जो फर्म की इक्विटी कंट्रीब्यूशन है, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं इक्विटी कैपिटल ऑफ द फर्म, ओनरशिप कैपिटल ऑफ द फर्म। The second type of funding is, now these together are known as equity of the firm. Second type of funding is that you take debt, उधार लेना। उसमें क्या-क्या आ जाता है? उसमें आ जाता है आप बैंक से जाके लोन ले लो, सबसे ईज़ी तरीका है। Second thing is कि instead of approaching a bank, going through all the formalities, और वहाँ पे मे बी इंटरेस्ट रेट बैंक बहुत ज़्यादा मांग रहा है, आपकी एक बिग फर्म है, आप डिबेंचर्स इशू करो। डिबेंचर्स क्या होते हैं? बैंक से उधार ना लेकर जनरल पब्लिक से उधार लिया, उसमें जैसे बैंक को हम इंटरेस्ट पे करते हैं, पब्लिक को भी इंटरेस्ट पे करते हैं, और 5 इयर्स के लिए डिबेंचर्स इशू करें, तो 5 इयर्स के एंड पे जो आपने अमाउंट रेज़ करी है, वो आप उनको वापस कर देते हो। जो 100 रुपए का अगर डिबेंचर आपने इशू करा 10% पे, तो एवरी ईयर यू आर पेइंग 10 rupees as interest, and after 5 years you have to return this principal amount of rupees 100. Okay, so these are two sources of funds for the business, equity and debt. Now, when I have my profit after tax, now board of directors they sit together, जो annual general meeting होती है, and they decide कि okay, अभी 100 रुपए का क्या करना है। अगर तो आगे बहुत सारी investment opportunities हैं, we don't want to distribute any profit, we want to retain 100% of the profits. My DP ratio, the firm's DP ratio will be 0%. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि डीपी रेशियो 50% होगी। 50 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 50 रुपीज रिटेन कर लेंगे। आगे कोई अभी इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, इस ईयर के लिए हम डीपी रेशियो 80% रखते हैं, तो 80 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 20 रुपीज फर्म अपने पास रिटेन करेगी। Though obviously there are number of factors which are involved in this decision making, but simply speaking, this is what DP ratio stands for. How much of the profit earned will be distributed and how much of it will be retained by the firm. So the formula is dividend distributed per share divided by the number of shares. So basically DPS is dividend per share, dividend divided by the number of equity shares. Tanvi, is that clear? Yes, ma'am. Okay. I'll keep on repeating these concepts because अभी आगे हम कुछ इसमें practical aspect भी करेंगे.
तब मैं ये कॉन्सेप्ट्स दोबारा रिपीट भी करूँगी। ओके? अभी के लिए जस्ट have an overview of how we reach the profits after tax and then how the firm decides on its DP ratio. Okay. Okay, I'll move back to the objectives of financial management. तो वहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो profit maximization है, that is all about maximizing the earning per share of the shareholders. Very popular objective, very universally accepted objective because profits are required for further operations of the business. You are evaluating the performance of your firm on the basis of profits earned. You are making intra-firm and inter-firm comparison. Intra-firm क्या होता है? अपनी ही firm का comparison over the years कि firm ने कैसी growth दिखाई है या क्या performance हुआ है over the past 5 years, that is intra-firm comparison. Within firm जो comparison होता है और दूसरा comparison होता है firm का comparison with its competitors, that is inter-firm comparison. So all this is possible only through the profit maximization objective. Okay, class, apart from this, every firm is using a number of resources to ensure कि वो efficiently और effectively utilize हो रहे हैं. Profit becomes the yardstick of performance of the firm. So these are the benefits of using the profit maximization objective. You're gonna have a look on your screens. सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर, आगे फर्म ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी है, सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कुछ वर्क करना है, तो उसके लिए भी सरप्लस प्रॉफिट्स रिक्वायर्ड होते हैं. तो because of all these reasons, profit maximization is accepted as one of the most uh, effective objectives or universally accepted, most accepted or agreed upon objective for financial management. Any point that requires explanation? Okay, so when I am analyzing a concept and when I am saying that there are two objectives, profit maximization and wealth maximization, and I'm comparing the both, it means that each concept, each objective has some positives and it has some negatives also. So next we talk about the criticism of profit maximization objective. But what I'll do is we'll stop here